Okay. Thank you, Ray. Yeah. Thank you, Pravalda. So first, congratulations to all of you for the World Poetry Day. And my first poem I'm reading in my own language, that is called Odia. It is an Eastern Indian language used by nearly 40 million people, 45 million people actually. So in Odia, the poem is titled "You Are the Poetry," तमे ही कविता। जेते थर तमकु देखे तमर कथा भावे, तमकु छुए जेबे भी तमर शब्द शिरशिर हुए मोर रक्तरे, जेबे भी तमे नीरव ही रही था मोठू दूररे, जेबे भी तुमे मो भितरे फुटुथा फुल वज्र परी, जेबे भी तुमे मोर असहायतरे कोड़ेई दियो मते देवी परी, जेबे भी तमे मते छाड़ी देई जाओ अध बाटरे एकुटिया ओ असहाय, जेबे भी तुमर ओठ गोलाप परी फुटी जाए मोर पवन रे, जेबे तुमे मोर ही मो भितरे था, जेबे तुमे तुमर केही नुह बोली कुह, जेबे तुमे मोर अंधार महाराणी, जेबे तुमे सहस्र सूर्यर अकुहा कहानी। पोड़ा बस्तीर घारे तुमर हाथ, कष्ट और कदम्बरे तुमर निश्वास, घृणार सहर रे तुमे चुंबन, अन्याय और अपसमय आगरे तमे एक मसाल, मृत्युर देशरे तमे अमृता, मरुभूमि राखिरे तमे मेघासनी, रक्ताक्त शिशुर करुणामयी माँ तुमे, युद्धरे तमे दुर्गा, क्षुधार जठरे तमे अन्नपूर्णा, लह लह धान खेतरे तमे श्रीदेवी, मृत्युर भय आगरे तमे सावित्री, तमे मनीष भीतर मानविकता, सबु तुमे, सबु कविता, कविता तमे ही। So this was my Odia poem, and now I'm going to read a poem in English, and this is titled "I'm Uncertain of My Address." This poem is translated by Mona Lisa Jena. I am uncertain of my address. Which village or city, basti or colony, bricklane or factory? Unfortunately, my address is in the care of someone else all the time. In my veins, the raw earth smolders, my bones dissolve in tar. I am the path of your vehicles. I am your amusement park. I am your splendid multiplex. I embody the despair of your